So yesterday हम डिस्कस कर रहे थे आपका that is normal subgroup, sorry, permutation group, and in permutation group we have completed the how to find the order of an element, how to find out the number of element of particular order in Sn and An, and how to find out the subgroup also. Next is you have a problem in dihedral group. See, what is dihedral group? We have discussed thoroughly. So, what kind of doubt you have, student? What kind of doubt you have in dihedral group? If you have some particular kind of doubt, then we can discuss that one also. Otherwise, we will discuss the dihedral group completely. Dihedral group. So, what is dihedral group? So, when you see the dihedral group, the Dn, sometimes say Dn, sometimes say some books say D2n with n symbols, or that is equal to, that is generated by xy such that, and x square is equal to e, and y raised to power n is equal to e, and xy is equal to y inverse x. This was the dihedral group. It means this is not commutative, and it will be generated by two elements. One is of order 2 and one is order n. In dihedral group, the order of dihedral group, if you say the order of Dn is 2n, order of dihedral group is 2n. Number one. Number two, one is called order of dihedral group. Second is the number of element. So number of element of order 2, you know how to find out the number of element order 2. That will be I think n plus 1 or n. Yes or no? Because first of all, we are not writing the number of element, we are writing the structure of dihedral group. That is x square is e, so we can write down x square, that is e, then y square, y raised to power n minus 1, then y raised to power n is e, then xy square, xy cube, xy raised to power n minus 1. So one is 1, 2, and this is n minus 1, this is n minus 1, 2n minus 1, then that is 2. And you know, this dihedral group, all these elements are of order 2. These are of order 2. This is also of order 2. So we have order 2 element n minus 1. This is n. But if n is even, this will also have an element of order 2. This is also having an element of y raised to power n by 2. This is of order 2 if n is even. So it means there is one extra element, and you can say the number of element of order 2 in dihedral group is d2, and if you say number of element of order 2 is n plus 1 if n is even, and that is n if n is odd. So this is called. And if somebody is asking how many subgroup of order, subgroup of order 1 you can form, subgroup of order 2 you can form, how many subgroup, or subgroup of order 2 is cyclic, then you can form the subgroup that is equal to number of element of order 2. So if the n is even, the number of subgroup of order 2 is n plus 1, otherwise n. Subgroup of order like n, this is the n, this is prime. If this is a prime, then we have discussed the prime case also, non-prime also, all these things. So this is the dihedral group. Dihedral group is non-abelian. Dn is
D21 लिखते हैं, D नहीं लिखते हैं. Title group is non-abelian group for n greater than equal to 3. For all n greater than equal to 3. Because n is equal to 1, that is D1, that is element 2 cyclic, D2 is also cyclic. D2 is abelian, sorry, order 4, E square, and D3, that is order 6, that is a non-abelian group. So you can also say this is also the non-abelian group for n greater than 3. And if you find out the center of Dihedral group, Dn. So what is the center? What is the center? Either identity, है ना? Identity or e comma y raised to power n by 2. If n is even, ऐसे ही कुछ. Yes, sir. So this kind of things was there. So who has asked the Dihedral group? Who had doubt? इसको डाउट थे इसमें? जिसको जो भी डाउट हो वो क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, because without question, if you say the complete theory, this is not possible. Complete theory is not possible to discuss right now. ठीक है, yes. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में ना लाइक क्वेश्चन ये आते हैं लाइक ऑन सिंपल ग्रुप, ऑन सिंपल ग्रुप क्या होता है? What is simple group? A simple group is a group which do not have any subgroup, any normal subgroup except trivial. देखो, except trivial. And determinant is 1. Determinant one? Determinant? No. तो SLNR बोलते हैं सर. That is SLNR. Simple linear group होता है बेटा वो तो. We are not saying simple linear group. We are saying simple group. A group is which has no normal subgroup except trivial. मतलब every group G has two subgroup. This is normal always. That is G. These two are always normal because these are the trivial normal subgroup. If this does not has a normal subgroup except the trivial, then group is called simple. So, sir, prime order cyclic subgroup are always simple group. Already discussed. We have already discussed this kind of things, no? Yes. If group is prime order, then it has only two subgroups. Yes, subgroup is only identity and itself. It means this is a simple always. Okay. Yes. The question is Z2 cross Z101 is simple. Yes. Is it simple? Okay, Pranshu. Yes. So basically, this is abelian. If a group is abelian, then every divisor, if you have divisor this order of Z2 cross Z101, the order is 200. So what is the divisor? 1, 2, 101. So these are the divisor. It means we have a subgroup of order particular 2 and 101 also. It means you can say this group is not normal. This group is not. Am I clear? Yes. Sir, how, sir? This group is not simple. Sir, कैसे? कैसे? See, Z2 into Z101, that is order 202. 1, 2, this. If a group is abelian, then every divisor acts as subgroup. How many subgroup we don't know. If group is
cyclic, then unique subgroup. A group, These are possible number of subgroups, sir. huh? These are possible number of four sub. These are four possible number of subgroups. These are the order. Yes, sir. Or possible subgroups. Order one subgroup exists, order this exists, this is exists. Not possible. These are the actually we can say कि these are the actual subgroups of order 101 because group is abelian. अगर ग्रुप साइक्लिक है तो ग्रुप has unique cyclic subgroup. But if a group is abelian, then every divisor of the order of G has a subgroup of G. It means there exists a subgroup of order 1, 2, 101 and 202 in Z2 into Z101. Okay. So it means this subgroup and these are also normal. Why normal? Because if a group is abelian, then every subgroup is normal. If group is abelian, then every subgroup is normal. It means this is not unique subgroup, sorry, non-trivial subgroup we have. Okay, yeah. Next question. If I say G is equal to S 2022, then G is simple. हाँ जी. What is the answer? सर इसका सेंटर ई होगा इसलिए ये सिंपल है। अच्छा, अगर किसी का सेंटर ई है तो सिंपल है। ये सर आपने ट्रिक बताई थी ना ये कि इसका कोई किसी भी मतलब किसी का सेंटर अगर ई है तो सिंपल है। बहुत बढ़िया। Center of G is E, that is okay. That is okay because center of S is equal to E for all n greater than 2. सही से नहीं पढ़ाया आपने। Center E does not imply simple. No. एक चीज बताइए मुझे, एसएन के 3 सब ग्रुप होते हैं, ई, एसएन, एएन, फॉर ऑल n greater than equal to 3 except n equal to 4. This is true for all n except n is equal to 4 because n equal to 4 we have. So this is not simple. Even the center has this. Yes or no? प्रांशु, थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखिए। कुछ मैंने कुछ और बताया था, आपने कुछ और सोच लिया। डन। अच्छा, हम क्या ये कह सकते हैं सर ये अल्टरनेटिव ले लें इसके सिमेट्रिक की जगह तब तो हो जाएगा ना सिंपल सर? जब देखते हैं एक मिनट अभी देखते हैं। इफ जी सिंपल, क्या मैं लिख दूं? जी सिंपल सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू ई ओनली। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? मुझे नहीं पता, मैं जस्ट आई एम आस्किंग टू यू। क्या मैंने ये तो नहीं बताया अगर कि कोई ग्रुप सिंपल है? ऐसा बताया था कुछ? आपने ये पढ़ा है कहीं? क्योंकि इसका भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। G is equal to ZP simple ZG is equal to Z because this is abelian. Done? Yes. हाँ बताओ क्या कह रहे हो? सर इसमें जो अभी लिया था लास्ट एग्जांपल सिमेट्रिक 2022 और
इसकी जगह अल्टरनेट लेते तो सिंपल हो जाएगा ये। यस, तो मुझे बताइए A3 का ऑर्डर 6 होगा, A3 का ऑर्डर A4 के 3 सब ग्रुप आते हैं नॉर्मल, A5। सो एक क्वेश्चन ये भी है कि A5 इज द लीस्ट, A5 इज द लीस्ट group which is simple in the alternating group category. Yes or no? Done. Suppose A3 is isomorphic to D3. And D3 has subgroup of order 2 also. Yes or no? D3 have center of G also. Yes or no? अच्छा ये बताइए, सॉरी पर आप मुझे बताइए, not this one, A3 is simple or not? मैं नहीं बता रहा, आप बताइए। A5 के आगे तो सब सिंपल है, A3 सिंपल और नॉट? सर डाउट है, अभी 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 बात करता हूँ जीनियस, जस्ट अ मिनट। A3 सिंपल और नॉट? A3 simple. Why? A3 simple. Why? Can you give me an example how you are saying this is simple? अच्छा, DN के नॉर्मल सब ग्रुप बताए थे मैंने, DN के नॉर्मल सब। See, if you say DN, going back, if you say DN like if you say D3, that is EX XY square. So D3 has this subgroup of index 2, order 3 subgroup. Order 3 subgroup is EYY square. This is like H, and this is a H is normal D3. Yes or no? H is normal D3. Yes or no? Because index 2 is always simple. So index 2 is always normal. Because D3 upon H index, that is D3 6 by 3, that is 2. So index should, and you know if 3 is isomorphic to D3. Yes or no? Am I clear? So how can you say, Rishabh, you are saying this is simple? भाई आप भूल चुके हैं क्या मेरी ग्रुप थ्योरी? मैंने ग्रुप थ्योरी आपको कराई थी, and detailed group theory we have discussed from December 1 to January 15, 14, 15. So don't do this kind of mistake. D3 is not simple. Am I clear? It means A3 is not simple. So smallest simple group, the least integer from which the every alternating group is simple, that is A, and n is equal to 5, n is equal to 4. We have 4 order subgroup. सर Yes, yes. सर ये सम हो गया, क्योंकि मेरा डाउट है सर। बोलिए क्या डाउट है? अच्छा सर, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S3 the number of elements of S3 the symmetric bracket the symmetric group on 5 letters. 5 letter S3.
the symmetric group on 5 letters. Number of element of S3. S3 अब सर ये सही से ये मुझे S मालूम नहीं पड़ रहा है एक सेकंड सर एक बार ब्रैकेट द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 5 लेटर्स which are their own inverse equals Which are their own equals their own equals. yes which are their own inverses own inverses sorry Own inverse. equals which are their own inverses equals so options है 10 so option है 10 11 25 26 So you are saying alpha is alpha square. So you have to find alpha. What is the answer? It means we can take one order and two order element. If somebody is saying how many element for order 2, that is also one inverse, but you are saying the one inverse, then you can say that is order 1 and order 2. Yes, who will tell me what is the answer? Now you can tell me. I will not tell you. You can tell me what is the answer. How many elements for a 2? Say 11. Order 2 how many element? बस मैं पूछ रहा हूँ. Order 2 के 8. Order 2 how many element? No, 10. Sorry, sir, 10. Only 5 10 element. factorial upon 2.3 factorial. 5 factorial. 2 5 में से कैसे बनाएंगे? 2 plus 1 plus 1 plus 1. 2 plus 2 plus 1. वो तो सही. Any other combinations? No. So that is 5 factorial upon 5 factorial upon 2 into 1 की पावर 3 into 3 factorial. 10 plus 5 factorial upon 2 की पावर 2 into 2 factorial into 1 की पावर 8. So answer is 5 factorial 120. 25 सर. ऐसे गलती कैसे कर रहे हो? 25. 9 4 8 15 12 10 25 26. Answer is D. Jinesh. बोलिए. Is it clear? ओके सर सर पर ये बुक में तो मतलब 11 बता रहे हैं. एक्चुअली कौन सी बुक से पढ़ रहे हो? सर ये अभी एक मेरे क्वेश्चन पेपर वाली बुक है. ये 16 साल अरिहंत की है. IIT जैम मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर्स. 2 plus 1 only. So 3 factorial 2 की पावर 1. तुम S3 कह रहे थे ना? नहीं सर एक सेकेंड. S5 है वो. सॉरी
5. बेटा S5 का आंसर 26 है। S5 का आंसर 26 है। ओके सर। मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा आंसर कैसे आ रहा सर है। शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। एक मिनट, तुम्हारा आंसर ही मैच नाइन और ये 3, इसमें आएगा आंसर 10, इसमें आएगा 4। तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, या तो क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है। दिस इज द राइट ऑप्शन। मैंने S3 भी चेक कर लिया, किसी का आंसर नहीं ठीक है सर। 26। ओके, थैंक यू सर। ठीक है स्टूडेंट, सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ग्रुप दिया दैट इज Z2 into S3। मैं कह रहा हूँ ये सिंपल है, दिस इज ट्रू और फॉल्स। Why this is not simple? Center is yes. So center of Z2, that is identity. No. So that is only Z2. So this is isomorphic to Z2. Has two element. Center, it means center is always normal subgroup. Center of any G is always normal subgroup. If center has some like non-trivial, trivial center, only identity center, that you cannot say that is simple. But if it is not, that is a simple. That is not simple. मतलब ये बताई होगी थ्योरी मैंने प्रांशु, कभी मैंने बताई होगी यही थ्योरी, एंड आपने सोचा कुछ होगा। Am I clear? Done? सर ये जैसे जो आपने ये बताई है ZG इक्वल्स टू ये E, ये नेसेसरी बोलेंगे या सफिशिएंट बोलेंगे सर? इसे Sufficient? कंडीशन होते हैं ना बहुत से क्वेश्चन कि ZG इक्वल्स टू ये आ जाए तो ग्रुप देखो, सिंपल हुआ। अगर किसी का सेंटर नॉन ट्रिवियल आ जाए, that is has more than one element but not exactly the number of element in a group. Yes sir. This is the sufficient condition to prove that is not simple. See, Okay sir. Z of any group
let us consider group is of order, मान लेते हैं n, and the center of G lies between 1 and n. ले लेते हैं ना तो ट्रिवियल है, it implies G is not simple. Done? G is not simple. This is called sufficient condition. Is it clear? यस सर। अब कुछ प्रॉब्लम्स आपके होमोमॉर्फिज्म की करा देते हैं। होमोमॉर्फिज्म, आफ्टर होमोमॉर्फिज्म वी विल नॉट डिस्कस एनी प्रॉब्लम। मुझे ये बता दो कि आपकी और प्रॉब्लम होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के अलावा क्या प्रॉब्लम्स हैं, so that we can close the session. So if you have some problems then we can discuss tomorrow, otherwise not. ठीक है, then you are free tomorrow. सर मेरा एक क्वेश्चन है। कल आपने क्वेश्चन दिया था, वही क्वेश्चन कह रहे हो ना? नहीं सर, दूसरा। यस। लेट G इज abelian group of odd order and H is equals to A square for all A belongs to G. Then number one, H is proper subgroup of G. Second, H needn't be subgroup of G. H is need not be subgroup of G. Third, H is equals to G. And fourth है H is subgroup of G only when G is of prime order. यस, ठीक है, कर लो प्रॉब्लम्स को, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बताइए भाई सब लोग, ऑल ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज द आंसर। सबसे पहले चेक कर लो H इज ए सबग्रुप और नॉट। H इज सबग्रुप और नॉट। सी AB इनवर्स, पहले AB और A इनवर्स। AB belongs to H, then AB belongs to this, then AB square is equal to A square B square. Yes or no? Because this is abelian, you are saying abelian. AB belongs to, we have to prove that AB belongs to H or not. So AB must be of the type of that is A square B square, sorry, है ना, A square. Am I clear? चलो मैं यहाँ से क्लियर नहीं कर पाऊंगा, पहले चेक करो कि अब ये ग्रुप है कि नहीं है। सब ग्रुप, सॉरी, H is yes. This is subgroup or not? Yes, tell me. Who will speak कि सर ये सबग्रुप है कि नहीं? भाई इतना क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, यू आर नॉट टेलिंग मी। Sir, not a subgroup, sir. G is a abelian group. Now this is subgroup. Why this is not a subgroup? See,
let two element a square b square belongs to H. It means a b belongs to G. A square b square belongs to H. अब मैंने ले लिया तो a b belongs to G आ गया. A b belongs to then a b also belongs to G. If a b belongs to G, then a b whole square also belongs to H. Yes or no? And you want to prove a b whole square that belongs to H, and that is equal to a square b square. So can you say this element belongs to H? So a square b square is also belongs to H. It means close with respect to multiplications. So whatever operations you are saying, yes or no? Number one. Number two, if a square belongs to H, it implies a belongs to G. A belongs to G, then a inverse belongs to G. A inverse belongs to G, then a inverse square also belongs to G. Sorry, a inverse square belongs to H. If a inverse x is belongs to H, then a square inverse also, this is also belongs to H. And we have to prove that a square, this inverse also belongs to H. So who can say, how can you say this is not a group? This is need not to be subgroup. Galat. Need not to be subgroup. H is subgroup. Proper subgroup तो है भाई इसका. भाई MCQ MSQ है, फटाफट बता दो मुझे. क्योंकि MCQ है तो आंसर आ गया. सर Yes? MCQ है पर आंसर 3 दे रखा है सर. थर्ड आंसर 3 दे रखा है ना? आंसर 3 दे रखा है. यू आर राइट. वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी. कौन बताएगा ये आंसर 3 है? इतना तो मैंने सॉल्व कर दिया. अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर. Yes, who will tell me what is the answer? Y H equal to G. H is a subgroup, that is okay, but proper होगा, ये प्राइम ऑर्डर होगा जब भी सबग्रुप होगा. देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमने ये ऑप्शन लगा दिया, ये भी लगा सकते हैं दोनों अगर MSQ है तो. ठीक है, MSQ है तो ये प्रॉपर नहीं लगाएंगे, फिर ये भी हटा देंगे. तो आपने ये लिख दिया. H equal to G क्यों है, बस ये बता दो. H is a subgroup, that is okay. Why H equal to G? चेक कर लो ना, चेक कर लो. See, till now you have proved that H is a subset of G. Subgroup. Now if you check G is a subset of H, if this is also, so let for this some A belongs to G. Okay, then A square is also belongs to G. Yes or no? If A square belongs to G, then if you take any G, then A square also belongs to H. It means G belongs to. क्या हम कह सकते हैं ऐसा कुछ? रांशु? यस सर. यस सर. डन ना? और बताइए क्या डाउट है किसी का? एनी डाउट हो मैं आगे डिस्कस करूं आपसे प्रॉब्लम? चलिए देखिए, अब जो टाइम है, द टाइम इज कि यू हैव टू पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है. ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है कि ये क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप आंसर बुक में से देख लें, उसे समझ लें. उसमें ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल भी 1% टेंशन नहीं होनी चाहिए आपके पास. इफ अगर आप टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होगा. डन. सी नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम होमोमॉर्फिज्म. मैंने डिस्कस कर लिया था होमोमॉर्फिज्म के लिए Z plus to Z plus. How many homomorphism? How many homomorphism? Already discussed. I am just revising and giving some of
Now, good question for you. How many homomorphism? That is infinitely many homomorphism, because you can say each and every homomorphism. In this homomorphism, after this homomorphism, we can say how many homomorphism from Zm to Z. मैंने बताया था concept, that is Ax, and just GCD of Mn is the number of homomorphism. Number of homomorphism GCD of Mn. Yes or no? GCD of Mn. And also we have discussed phi of Zn to Zm is also GCD of Mn. So number of homomorphism from Zm to Zm or Zn to Zm both are same. That is GCD of Mn. Am I clear? How we have discussed? We have discussed this thing ki this A, how to find out the homomorphism. This is also one problem, like we have phi Z6 to Z10. So how many homomorphism? That is okay. Everybody know how to find out homomorphism. क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता. ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म तो ऑलवेज होती है. But we can have the homomorphism, which is the homomorphism. So phi x is equal to ax. Basically, A must be in Z10, okay, and order of A must be divisor of order of Z6 also. Yes or no? क्या मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको? मतलब इसका ऑर्डर क्या है, इसमें किस इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 1 2 3 6 here 1 2 5 10. So if you take this, not possible. 8 10 order, 10 cannot divide here, 5 cannot divide here, 5 also. Either A is 1, order of A is 1, or order of A is 2. Order of A is 1, that is 0, 5 is equal to 0. Okay, order of A is equal to 2, that is 5x. So we can have only two homomorphisms, that is 5x equal to 0x and 5x equal to 5x. Because everybody can tell you कि what is everybody can find. Sorry, setting change over here. Yes, wait. 5 from Z6 to Z10. 1 2 3 6 5 10, not possible. So 5x equal to x implies 5x equal to 0x and 5x equal to 5x. Both are homomorphism. So this is the important question. What are the homomorphism? Basically, sometimes there is a question: if phi is a homomorphism which map this to this, then what is the next image? Let us consider a question दे दिया मैंने. Let phi is a homomorphism from Z6 to Z10, and phi is non-trivial, which maps one to 5. Two to 0. Then
What is 5 of 4? So until unless you don't know what is the mapping, then you cannot find out the answer. Yes, what is the answer? What is the answer, student? बोलिए. 2. This is only we have mapping. The non-trivial mapping. Yes. बोलिए आंसर 0 होगा नहीं होगा? Am I clear or not? Somebody also asked what is the kernel of 5? Kernel of 5 is all those x, so that 5 is equal to 0. So this kind of question they can ask in the exam. Am I clear? Yes, चलिए. इस तरीके का क्वेश्चन आप कर सकते हो कि भाई ये homomorphism है नहीं है, which of the following is a homomorphism, which of the following is not a homomorphism. This kind of question you can do. Done. Okay. Now the second category is find the number of homomorphism. सर ये Z2 क्रॉस Z5 है. Z2 cross Z5. अच्छा मैंने ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, बस मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है आपने रिवाइज करा नहीं है ग्रुप थ्योरी सही से. आंसर इज 2 सर. Why the answer is 2? Because सर GCD of 6,2 into GCD of 6,5. automatically this is also isomorphic to Z10, so you can also write down that is Z6 to Z10 GCD of 6,2. Otherwise the formula is this: GCD 6,2 GCD 6,5. That's kind of problem. You can write down. So yes, number of homomorphism you can write down like this. Done. So number of homomorphism is clear till now. Okay, so these are from the abelian group, and if somebody is asking question like this, number of homomorphism from Zm cross Zr cross Zs. तो यहाँ पर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म का फॉर्मूला जो होगा
that is GCD of none. This is you can find out easily. Now the next problem is, if somebody is asking what is the like D4 to center of D4 to Q8 and center of Q8. How many homomorphs? How many homomorphism exist? Pransu is saying 16. What about others? Okay. So this kind of problem, do not worried about. This is D4, bone center of D4. D4 is 8, center of D4 is 2. Let us cancel 4. So that D4 either isomorphic to Z4 or this is cyclic, so this is abelian, but this is not abelian, so that is isomorphic to this. So phi is a mapping from Z2 into Z2. What is this? Q8 upon center of Z8, Q8, center of Q8, 8 upon 2. Yes or no? That is center is 1 minus 1. That is also for cyclic, no, that is Z2 into Z2. So this is isomorphism, this is homomorphism like this. So answer phi equal to 2 into 2 into 2 into 2. GCD this, GCD this, GCD this, GCD this. Am I clear? So please revise all these things. अच्छा, आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं? मेरे नहीं बना रखे हैं। मैंने जो आपको नोट्स बनवाए थे, मैंने जो आपको थ्योरी लिखवाई थी, उसके नोट्स बना रखे हैं आपने? पहले तो मुझे ये बताओ, जिस तरह मैंने आपको कराया उसके नोट्स बना रखे हैं जो एंड टाइम के लिए, वो वही आपको काम देंगे, वही Yes, sir, काम बनाए। आपके आएंगे। यस, बनाया सर। वही काम आएंगे बेसिकली, उन्हीं में मैंने सब कुछ लिखवा रखा है। ये उन्हें रिवाइज कर लो, ज्यादा मत करो कुछ। आज बुधवार है, बृहस्पति शुक्र शनि 3 दिन हमारे पास आईडीज हैं, तो 3 दिन में आप वही कर पाओगे। उससे ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, वो मोर टाइम आपका। और जो नीतू मैम ने कराया उसको उन्होंने जैसे बताया उनका कर लो आप। नाउ जो टाइम है वो प्रैक्टिस का नहीं है। यस, प्रैक्टिस का है टाइम, लगता है आपको प्रैक्टिस करानी होगी प्रॉब्लम की। अब तो टाइम प्रैक्टिस का नहीं है, अब तो आपको बस रिवाइज थ्योरी को कंटेस्ट करना है। यस सर। थ्योरी को देखना है कि थ्योरी में कहां कहां पर हम भूल चुके हैं। कुछ चीजें है ना, मैं भी भूल जाता हूँ, आपके सभी भूल जाते हैं जब आप पढ़ते नहीं है। तो रिवाइज करके याद आ जाएंगी, उनकी प्रॉब्लम्स आपने लिख रखी होगी वो भी याद आ जाएंगी, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, ऐसे करना है बस आपको। इफ यू डू इन दिस वे देन यू कैन अचीव योर गोल इजीली। How many homomorphisms exist?
Very good. How did you find out? सर U27 को Z18 लिख दिया और ZY6 Z को Z6 हो गया। उससे आंसर आ जाएगा। यू आर राइट। भाई ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, वेरी गुड। तो आपको ये चीज याद है। वेरी गुड। एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की बात आती है। बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है ऑन टू में आती है, क्योंकि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इज इजी। जैसे कोई होमोमॉर्फिज्म है, वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कह रहा है, तो वो एक होमोमॉर्फिज्म भी होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, number of onto homomorphism is always less than equal to number of homomorphism. मान लीजिए किसी ऑप्शन में आपसे पूछा हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म, onto homomorphism, you know the homomorphism, not onto, and answer is given then greater than onto, all this greater than onto, except only one answer. So that is also you can easily find out, you can easily cross the answer. ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम Z to Z. So you have set that is infinite. But is somebody asking how many onto homomorphism? How many onto homomorphism? So how many onto homomorphism? Onto means the mapping must be, the range of the homomorphism must be the codomain, that is Z. So only there are so many homomorphisms, the phi x equal to x, phi x equal to 2x, 3x, and all these x, and phi x equal to minus x, minus 2x, and all this. These are homomorphism. Only this and this will map the Z to Z, otherwise not. This is 2Z, this is 3Z, 4Z, 5Z, all these. So this is not mapping to all the elements. It means this is on these two mapping are only the onto homomorphism. Am I clear? Am I clear? See student, yes, beta clear बात? Yes sir. हाँ जी स्टूडेंट, yes. तो onto homomorphism, how to find out? तो onto homomorphism you can find out by the help of, like, if you can map all the elements into the map. Basically जो elements पूरे आ जाते हैं, जो मैप कर देते हैं Z को, है ना, G को G में या whatever. Okay, this is clear. This problem is clear ना? So going to next problem. If the question is not Z to Z, the phi is from Z4 to Z6. How many onto homomorphism? See, onto homomorphism, how many? See, homomorphism is equal to 2. The number of onto. सर 0 हो जाएगा सर। Why 0? सर 3 में 3 की प्री इमेज नहीं आएगी, 3 ऑर्डर वाले की प्री इमेज नहीं आएगी सर इसमें। Yes. So basically number of homomorphism is 2 and number of onto is only 0. Yes, you are right. Why is it right? Because if you map, so one element cannot map to more than one, na? Basically, if less than, if left hand side the number of element is less, right hand side is more. So one, two element map to single, okay, but one element map to two, that is not possible. Yes or no? If here you can say the Zm to Zm, phi m, n is greater than m, no onto.
Am I clear? Then non-to homomorphism. सर 1-1 होमो की पूछे तो इसमें 1-1 भी नहीं. यस सर. Yes, tell me how many 1-1? Yes. Z4 to Z6. How many 1-1? See, one is trivial homomorphism is neither 1-1 nor onto. Trivial homomorphism is 1-1, no? Why? Because this is many one always. Yes or no? All these elements are mapping to only one identity. Yes or no? Trivial is also always many one. Onto is not, because the other element we have so many, except if there is a homomorphism from any G2 identity. If order of right hand side group is 1, then it can be onto. Otherwise it cannot be onto. Yes or no? Yes or no? Yes sir. So can you say any 1-1 homomorphism exists? इधर 4 एलिमेंट, इधर 6 है, क्या 1-1 हो जाएगा? नो. है? हो सकता है 1-1. फिर सर वो 1-1 होगा तो इसमें ऑन टू नहीं होगा फिर सर वो. So we have 0, 1, 2, 3. Yes. We have 0, 1, 2, 3, 4, 5. Let us consider 2 element is not mapped. 2 is not mapped. Then you can say that is 1-1. So but 1-1 होगा नहीं होगा ये बता दीजिए मुझे बस. Basically you know the mapping 5x equal to 5x we have. 5x equal to 5x, 0 is mapping to 0, 1 is mapping to 5, 2 is mapping to 0. Yes or no? That is not 1-1. It means that is not 1-1. Yes or no? Anshu, am I clear? Yes sir. There does not exist any 1-1 homomorphism. Next question. Somebody asked 5 is Z8 to Z4. Yes. Z8 to Z4. So is there any onto homomorphism? Yes, onto maybe, because right hand side is less than. If right hand side is less than or equal to, there may be onto homomorphism, but what are the onto homomorphism? See, if phi is Zm to Zn and n divide n, then phi, what is phi m is the number of onto homomorphism. Phi m is the number of onto homomorphism. ठीक है? So how many onto homomorphism we have? 5, 4. That is true. वैसे कितनी आती? Total homomorphism कितनी आती? Total homomorphism. सर ये 5m क्यों होगा सर? n और m का जीसीडी लेंगे वो होगा ना? That is total number of homomorphism. सर ऑन टू की कह रहा हूँ सर. Onto is only phi n. Phi m छोटा वाला. अगर जीसीडी आता तो इसके बीच में होमोमॉर्फिज्म मिल जाती तुम्हें दोनों. जीसीडी मतलब 2, but you are saying there does not exist any homomorphism. Onto homomorphism. Yes sir. Yes. Is it? बात क्लियर हो गई? बोलिए फटाफट, क्लियर हुई नहीं हुई? क्लियर प्रांशु? चलिए सर आपने ये Z4 by Z6 लिया, Z4 to Z6, इसमें जो है आपने लिखा रखा है कि
ये मतलब जो जिसमें मैप कर रहे हैं हम, उसका ऑर्डर डिवाइड करना चाहिए जिससे मैप लाए हैं। यस, तो सर 6/4 तो नहीं होंगे ना? तो 6 डिवाइड करता है 4 को, नहीं करेगा ना? तो जब भी तो कहा था कि कोई भी ऑन टू मिलेगी नहीं, बट यहाँ पे आ यस। जाओ, और दूसरे वाले में 4 8 को डिवाइड करता है। डिवाइड से जीसीडी। सर आपने पहले जीसीडी भी लिखवाया था, वो समझ में नहीं आ रहा। जीसीडी सी, हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म, टू। फिर क्वेश्चन आता हाउ मेनी ऑन टू। ये 0 हो गए। ये 0 क्यों है? क्योंकि जब यहाँ पर ज्यादा एलिमेंट है तो सारे मैप कैसे हो जाएंगे? एक एलिमेंट की 2 इमेज कोई हो जाती है कभी? यस। बताइए, यहाँ पर एलिमेंट है 4, यहाँ पर है 6, क्या एक दो की तो एक इमेज हो जाती है, एक की 2 इमेज कोई होती है? इट मीन जब एक की 2 नहीं मिलेंगे तो सारे मैप ही नहीं होंगे, और मैप नहीं होंगे तो ऑन टू नहीं मिलेगी। पर अगर हम ऐसा ले लें, यहां पे भी नहीं मिलेगी कोई ऑन टू, नो ऑन टू, बिकॉज ये डिवाइड नहीं करता। डिवाइड नहीं करता तो यहां पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अनमैप्ड बन जाएंगे। यस सर। ठीक है, बट ओनली व्हेन द डिवाइड, when you say the Z8 to Z4, one is Z4 to Z8। हाँ तो ये डिवाइड होगा तो छोटा वाला ही जीसीडी हो जाता है, 4 और 8। इसलिए 5 छोटा वाले दो। यस सर, नाउ क्लियर सर। ठीक है, तुमने जीसीडी लिख लिया होगा, इन दोनों का यही आएगा। यस सर, यस सर। पर ऐसा मत लिखो, फाई एन लिखो। ओके। जीसीडी मत लिखो, फाई एन लिखो। कुछ कुछ प्रॉब्लम तुम्हारी क्लियर हो रही होगी जो तुमने कल पूछी थी। यस सर। है ना? यस सर। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछा मेरे से, हाँ जी जिनेश, समझ में आ रहा है बेटा? जिनेश, ऋषभ, सनी, सनी यू आर इन फर्स्ट ईयर ना? सनी यू आर इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, है ना? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट है? फर्स्ट ईयर सर। यू आर नॉट ऑडिबल। फर्स्ट ईयर सर। फर्स्ट ईयर, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, दीज पॉइंट्स? यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुमने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कैसे कर लिया? मतलब IIT में ज्वाइन कर लिया? पता नहीं सर, तो ज्वाइन कर लिया। चलिए, सो व्हाट यू कैन डू, यू, जो आपके पास रिकॉर्डिंग जो भी है ना, बार बार देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप तो टॉपर बन सकते हैं IIT जैम के, इफ यू डू हार्ड वर्क एंड यू कैन बी द टॉपर, टॉप 5, टॉप सेकंड, इस टाइप से आ सकता है। मेहनत कीजिए बस आप। हाउ मेनी ऑन सर ये 5 6 सर 2 5 6 2 हो जाएगा सर। 2 होमोमॉर्फिज्म, यस वेरी गुड। क्योंकि Z7 है, दैट इज Z7, डोंट थिंक दैट इज Z7, Z7 स्टार, यस 6 ऑर्डर का साइकिल ना, that is isomorphic, you can say that is nothing but Z6 ना, एक एलिमेंट कम कर दिया ना, आइडेंटिटी 0,
नॉन जीरो कह रहे हैं, isomorphic to Z6, and this is, what is this? Z6. So Z6 to Z6, how many homomorphism? 6. And how many on 2? 5, 6. 2, 1 and 5. You can also say these are homomorphism. You can tell which are the onto homomorphism. You can tell also. Yes or no? Which are the onto homomorphism? Yes. Done. One more question. 5 is how many onto? Yes. How many onto? सर 0. Why 0? सर 8 ऑर्डर का तो उसमें प्री इमेज नहीं मारेगी ना. 8 ऑर्डर की प्री इमेज मतलब ये Z8 में 8 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा. Yes. इसमें 4 तक मिल वैसे सकता भी है. कह सकते हैं, like if you have whatever you will do, you are saying you are mapping to Z8. Yes, you are right. ऐसे लिख लो कि ऑर्डर 8 है मेरे पास राइट हैंड साइड में, दैट विल बी नॉट मैप्ड. प्री मैपिंग नहीं आएगी ना, प्री इमेज. यस और नो? यू आर राइट, दैट विल नॉट बी डन. बट आंसर आ गया 0. 5 Z8 Z16. How many onto? How many onto? 16 divide the order of left hand side, that is okay. सर इसमें भी नहीं होगी सर. Why? 16 ऑर्डर का एलिमेंट मैप की प्री इमेज नहीं मिलेगी. हाँ. So are you getting my point? मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. फिर हम प्रॉब्लम ये भी ले सकते हैं. D3. How many onto? Right hand side 6 order, left hand side 12 order. सर इसकी एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूँ आपको, एक लाइन याद रखो. होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन. यस सर. है ना? मान लिया मेरे पास, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस इज होमोमॉर्फिक इमेज. सो व्हाट इज फाई ऑफ दैट? इज यू आर सेइंग दैट इज Z6, that is isomorphic, या you are saying that is homomorphic. ये D3 बता रहे हो, that is okay, that is also D3. It means, but this is homomorphic image of this is D3, but homomorphic image of this is abelian group, because abelian group की homomorphic image is always abelian, but this is a Yes. non-abelian group. It means there does not exist any onto homomorphism. Am I clear? So by this way you can solve as many as question. These are the techniques by which onto is easy.